Today we are going to start our next topic, that is information technology, our subject. My name is Professor Vibhavari Javle. So here we are going to add the index for our presentation. The first one is how the CSS, that means the cascading style sheets, works. Second is in general the CSS syntax. Third one is CSS syntax along with the example. There will be the two examples. Then I will explain the three types of the CSS, the name of the three types of CSS. Then next one, when and why we use the external CSS, and external CSS along with the explanation, the actual the procedure steps required to follow the external CSS in our program, how to use the external CSS, and at the last the HTML coding along with the explanation which included the external CSS. Now just take the short review of the CSS. CSS means the cascading style sheet. It means to, and what do you mean by the cascade? Cascade means to pass something on to the succession of the others. CSS describes how the HTML elements to be displayed on screen, on a paper or the other media. So that means CSS is essential to the overall representation of our web page or the website. It helps to control the layout of the multiple web pages at once. If we need to change if we need to change the styles of entire website, then just to make the single change, and that is equally applicable or in entire web pages at the one. How the CSS actual work? As you know, the CSS is cascading style sheets. It contains the rules for the presentation of the HTML. So that means there should be the HTML code. In that code, whatever styles we require to include, so that styles are represented by the CSS, and the HTML and plus these styles sheets, style rules, are shown as the web pages, but in a effective manner, because we applied various style sheets over our basic HTML code. So CSS was introduced to keep the presentation information separate from the HTML. Now the next one, CSS syntax. As you know that CSS rule set contains selector and the declaration block. Selector means what? Selector indicates the HTML element you want to style on. It could be any tag like body tag, h1, p tag, etc. So that means when we require to apply the style on any tags inside our HTML code, then we can take them inside the style tag in the form of selector tag. So that means हमारे HTML कोड के अंदर जहाँ पर भी सेंटेंस होगा, कोई टेक्स्ट होगा, in between the tag, for example the body tag, h1 tag or the p tag, we can represent that tags in the name of the selector tag. Declaration block. Declaration block is, it contains the property and its respective value. In that declaration block you can include one or more declaration at the once, but it should be separated by the semicolon. Each and every declaration contains the property and its name, the property name and its respective value, and this property name and the value should be separated by the colon.
information you are already aware from the last presentation. Now, examples of the CSS syntax. Now I will take the example first. In this example, I'm going to show you that in my code, if it is included that certain text or certain sentence is there which is in between the p tag, that means the p tag open and p tag close. Over that sentence, I would like to apply this property name of the color, and its value should be the blue. In that case, I will take selector in the form of the p. See, because I have used the p tag in between my HTML code, so that's the reason behind हमें जो भी टैग के ऊपर स्टाइल्स अप्लाई करने होते हैं उसको हमें स्टाइल टैग के अंदर इन द फॉर्म ऑफ सिलेक्टर चूज़ करना पड़ता है. In above example 1, selector is p. That means the styles applied to be on the p tag used in a HTML code. हमारे कोड के अंदर हमने p tag यूज़ किया है. So that's the reason behind I have choose the selector as a p. Next point is declaration. It contains the name of the property. वो क्या है? वो है the color and its value is blue. So this property name and the value is separated by the colon symbol. Now I can take this again. What do you mean by the property? Property means it is the type of the attribute of the HTML element. It is just the type of the style we need to apply. हमें जो प्रॉपर्टी जो स्टाइल अप्लाई करना है उसे हम प्रॉपर्टी का नाम दे सकते हैं. इट कुड बी द कलर, बॉर्डर और द फॉन्ट साइज. द वैल्यू, जो प्रॉपर्टी है उसकी अप्रोप्रिएट जो वैल्यू सेट करना है, तो वैल्यूज़ आर असाइन टू द CSS प्रॉपर्टीज. At the end of this presentation, I have assigned the CSS chart over there. In that chart, I have mentioned the property and its respective values along with the CSS syntax as well. It could be any value we need to put in front of our property, just like blue 12px, so that means 12 pixel, etc. In short, we can assign the CSS syntax in the form of selector should be first into the curly brace property 1, then its respective value separated by the colon. Then start with the second property and the value set, we should assign the semicolon there. So it is the in general representation of the CSS syntax should be there. Now the next example 2. In the previous example, I have only take one combination of the property and the value. In the next example, here I am going to show you I have taken selector is there, but I have assigned here two declaration in the form of property and its values. In our example 2, here selector h1, that means two styles applied to be on h1 tag used in a HTML code. In my HTML code, there should be, I have been use certain h1 tag, and over that the sentence I need to apply about two declarations. So that means the two styles applied on that h1 tag. Declaration, it contains the first style property, that is the color, and its value is red, separated by the colon symbol. Second style property is font size and its value is 12px, separated by the colon. And these two style properties are separated by the semicolon. Now we can see the types of the CSS. CSS, that means the cascading style sheets. So there are n number of
style sheets, but there are the three types of it. To implement the styling information in a HTML, we have the three types of CSS. First one, internal CSS or embedded style sheet. Second is external CSS. Third one is inline CSS. Here in this presentation, we are only going to be focused on internal CSS or embedded. Then the next question is when and why to use the external CSS. The first thing is an external style sheet is used when you want to make changes in a multiple pages. So that means, as we seen that for using the internal CSS, we can make changes on a single web pages. So that's the main reason behind we can use the external CSS. So when we require to make a changes on a multiple pages, दैट मीन्स अगर हमें एक से ज़्यादा अगर वेब पेजेस के अंदर बहुत सारे चेंजेस करने हैं, एट दैट टाइम हमें एक्सटर्नल CSS की ज़रूरत है. नाउ it provide the facility to change the look of entire website by make changes in a one single file. There are the certain steps required to include the external CSS in your HTML code, but you can change in general the entire look of external the GUI of your website while using the only single make multiple changes in a single file. So these are included in the steps of the external CSS. Now the next one is external CSS means what? External CSS is simply the listing of the CSS rules. Those are including the selector and the property and its respective value that it cannot contain in HTML tags. As you see in the previous type of the CSS, in an internal CSS, the CSS rules are itself included in that HTML tags, but here in this case external CSS and external style sheet is simply a listing of the CSS rules and it cannot contain in a HTML tags. So there are the steps to include the external CSS. For that we require the link tag, which goes in the head of the HTML page and is used to link to an external style sheets along with the .css extension. So here to make the external CSS we require the two files. The first one here in that HTML page we only include the link tag in between the head tag open and the head tag close, and again you require the second file for the external style sheets having extension .css. Then move all the CSS rules from the HTML file to the style sheet CSS rules. So that means CSS rules are nothing but the selector and the declaration of the property and its respective value for the page in the head section of the HTML file. See here, I have explained here again the move all the CSS rules from the HTML file to the style sheet CSS rules. That means selector and the declaration for the page in the head section of the HTML file. Now the next, how to use the external CSS. To use the external CSS we require the two files. File number first, you need to make the file name .html file. So that file is a normal HTML coding file. So write the HTML code is a normal with all the basic tags in a notepad or any kind of text editor, and then use the link
tag instead of style tag as we learn in an internal CSS program. So listen carefully. यहाँ पर हमें जो फर्स्ट फाइल होने वाली है उसका नाम क्या है, फाइल नेम 1.html, ये हमारी फर्स्ट फाइल होगी. तो उसके अंदर हमें जहाँ पर हम स्टाइल टैग यूज़ करते थे इन आवर इंटरनल CSS वो नहीं करना है. अभी हमें ऑन दैट सेम or we can say like a position we can use the link tag. Okay, now save the file with the file name file1.html as we usually do. Okay, now the next one, how to use the external CSS. We require the second file, its name is file2. Make the file name 2.css file. एक फाइल हो गई है, उसका नाम क्या है, फाइल नेम 1.html. अभी दूसरी फाइल हमें रिक्वायर्ड है जिसका नाम हम देंगे फाइल नेम 2.css. इसका एक्सटेंशन .css होगा, html नहीं. बिकॉज क्यों, all the style sheets, all the styles required for your file number 1 we only mention enrolled in within this file name 2.css. Okay, so then open your notepad or any text editor. It is the steps. Now enroll all the style definition in one file. और जितने भी अपने स्टाइल डेफिनेशन हमको एलोकेट करना है ऑन दैट द प्रीवियस फाइल नेम 1.html, उसके ऊपर जितने स्टाइल्स हमें करना है, डेफिनेशन है उसके, वो हम एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल h1 इज़ द सिलेक्टर एंड inside that bracket we are having our declaration in the form of the property and its the value. क्या है प्रॉपर्टी, वो है कलर और उसकी वैल्यू हमने सेट की है ब्लू. अगेन सेकेंड भी हमारे पास एक स्टाइल डेफिनेशन है, उसका नाम क्या है, p इज़ द सिलेक्टर. इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास दो प्रॉपर्टी सेट होंगे डिक्लेरेशन के. एक होगी प्रॉपर्टी नंबर 1, वो क्या है, कलर, उसकी वैल्यू होगी रेड. सेकेंड जो है वो क्या है, डिक्लेरेशन होगा, फॉन्ट साइज हमें सेट करना है. फॉन्ट साइज ये प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू होगी द 12px. ओके, नाउ ये हो गया. देन save this second file with the extension .css. So like file name 2.css. Now हमारे पास now we are having our two files. The first one is file name 1.html, second file name 2.css. Okay, now we only need to do what, we only need to run the first file. उसका नाम क्या था, file name 1.html, as we link it with the second file. अभी सेकेंड फाइल को हमें उसके साथ लिंक करना है, और कि वो हम कैसे करेंगे, it will run along with all the styles. See here, now run the first file name 1.html as we link it with the second file name 2.css. It will run along with all the. Now see here I'm going to show you our file name .html file. Here you can see the basic tags required to do the HTML coding. We have the HTML open close, we have the head open, the head close, and in between that the head open, the head close, we are use the link tag. वहाँ पर है, देखो मैंने link tag यूज़ किया है. REL ये क्या शो करता है, इट शोज द रिलेशनशिप. ओके, वो क्या है, वी आर गोइंग टू लिंक द फाइल, बट उसका फॉर्मेट क्या होगा, वो एक होगी स्टाइल शीट. इसीलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है लिंक REL इज इक्वल टू, REL उसका एट्रीब्यूट है. REL मतलब क्या है, उसका फुल फॉर्म है रिलेशन. तो लिंक का क्या रिलेशन है, वो जो फाइल होगी वो है स्टाइल शीट. ओके, अभी ना उसका टाइप क्या है, a type is equal to text by CSS. So that means we included the information in that linked file in the form of text. Okay, now and the third attribute of the link we required, it is href. It means what,
उसका जो एड्रेस है वो हमें देना पड़ेगा, जो फाइल हमने एक्चुअली उसका नाम क्या है वहाँ पर हमें रेफ़र करना है। नाम क्या था? style.css। ओके, इधर मैंने फॉर एग्जांपल के लिए ये जो नाम है उसके चेंज किए है। तो सेकेंड वाली जो हमारी थी फाइल नेम 2.css, यहाँ पर मैंने चेंज करके उसको नाम क्या दिया है? style.css। we only need to do that, only mention the link tag here instead of the style tag we use in a internal CSS। internal tag में जैसे हमने in between the head tag open, head tag close, we use the style tag। okay? उसको हमें रिप्लेस करना है, यहाँ पर होगा उसकी रिप्लेसमेंट along with the link tag। बट लिंक टैग यहाँ पर अकेला नहीं होगा, वो क्या है? वो है एम्प्टी टैग। ओके, मतलब जैसे स्टाइल टैग ओपन, स्टाइल टैग क्लोज होता है, वैसे है कि यहाँ पर नहीं है। ये सिर्फ क्या है? लिंक टैग इज द एम्प्टी टैग, बट इट कम्स along with the 3 मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स। एक यहाँ पर 3 एट्रीब्यूट्स उसके होने ही चाहिए। एक क्या है? rel, सेकेंड है टाइप, थर्ड है href। फर्स्ट जो एट्रीब्यूट है इट्स इंडिकेटिंग द फॉर्मेट क्या है फाइल का? स्टाइल शीट है उसके अंदर। उसका टाइप क्या होगा? वो फॉर्मेट है टेक्सचुअल फॉर्मेट में, एंड उसका नाम हमें आगे लिखना है। तो ये 3 जो एट्रीब्यूट्स है rel, टाइप एंड href होने ही चाहिए while using the external CSS। and now inside the body section we can use the statements over here। I have applied the styles over the h1 tag and that sentence। this is the heading tag h1 I use। see here the first file have to make, मैंने इसका नाम चेंज किया है, उसका नाम क्या है? external extr.html। use the link tag to make a link with the second file having style.css। तो मतलब ये फाइल का नाम है external.html। इसके साथ मैंने लिंक टैग यूज़ किया है जो करता है रेफर टू द सेकेंड फाइल जिसके अंदर हमारे स्टाइल्स है, उसका नाम क्या है? style.css। नाउ सी द सेकेंड फाइल विल रिक्वायर्ड। सेकेंड फाइल में हमने सिर्फ देखो इन दैट बॉडी सेक्शन वी ओनली use the single sentence inside the h1 tag। so style.css ये हमारी सेकेंड फाइल है, यहाँ पर कोई भी टैग्स की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जैसे हमें स्टाइल शीट की डेफिनेशन हम एलोकेट करते हैं कि वो कैसे करते हैं? फर्स्ट वन सिलेक्टर होना चाहिए एंड inside that braces we require the style definition और क्या है? declaration। here I have used h1 tag is in the form of selector and I have the 2 declarations over here। first one is color is equal to navy। second I use the property, उसका नाम क्या है? margin left, वो होगा 20 पिक्सल से। ओके, एंड हियर ये सिर्फ एक ही जो सेंटेंस है, स्टाइल डेफिनेशन है, स्टाइल डिक्लेरेशन है, वी ओनली रिक्वायर्ड इन अवर सेकेंड फाइल। उसका नाम क्या है? सेकेंड फाइल का style.css। वी एनलिस्ट ओनली स्टाइल्स वी सपोज टू अप्लाई ऑन वेरियस टैग्स वी यूज इन अवर फर्स्ट फाइल। if we applied or follow the steps for the first file external.html on the second file style.css, and we mainly to link these 2 files, so then the output will be like this। this is the heading tag h1 I use। okay, सी मतलब एक्सटर्नल CSS अगर यूज़ करना है तो हमें वी मस्ट रिक्वायर 2 फाइल्स। हमें 2 फाइल्स की ज़रूरत होती है। एक फ़ाइल के अंदर सिर्फ जो हमारा HTML कोड रहेगा वो रहेगा, बट स्टाइल डेफिनेशन होगी कहाँ पर? इन दैट सेपरेट फाइल style.css। ओके, सो वी डू रिक्वायर 2 फाइल्स टू रन द एक्सटर्नल CSS। और अगर एक ही भी चेंजेस हम अगर स्टाइल शीट में करते हैं, हम बहुत सारे पेजेस पे वो क्या कर सकते हैं? लिंक कर सकते हैं। समझ में आया? सो इट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड एक्सटर्नल CSS इज इट गिव्स वेरी
advantages more than that the इंटरनल सी एस एस, बिकॉज इंटरनल सी एस एस के स्टाइल्स शीट्स सिर्फ एक ही जो स्टैंड अलोन जो रहेगा पेज उसी के ऊपर अप्लाई होता है. एक्सटर्नल सी एस एस में ऐसा नहीं है. स्टाइल डेफिनेशन जो सेपरेट एक फाइल होगा स्टाइल डॉट सी एस एस, वो अगर आपके पास है आप बहुत सारे पेजेस पे उसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, आई थिंक एक्सटर्नल सी एस एस का ये पार्ट आप लोगों को समझ में आया होगा. होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स. थैंक यू.